Today I'm here to speak few lines about Independence Day. So on this very important day, on 15 August, we celebrate the freedom that our ancestors have done before sacrifice, before many years, right? So Azadi ek niyamat hai. It's a blessing bought by blood, sacrifice and courage of countless freedom fighters. हमें अपने वतन का नाम रोशन करना है with honesty, freedom and courage. So let's remember that the freedom is not just a gift, but it's a responsibility. And let's never forget that India is not just a piece of land, but it's an emotion. Thank you so much. Happy Independence Day. So I'm representing Government Girls Higher Secondary School, Magam, and today we came here to celebrate the 79th of Independence Day. This is a national event celebrated all across the country. This day reminds us about we have got independence from the British after 200 years ago. So this year, this day is aware. This day makes us aware that we have got a freedom. We have got a chance to celebrate this today. Thank you. Independence Day is the nation liberation of our nation. It is a monument day which brings us together to celebrate the freedom, unity, patriotism. Independence Day is celebrated on 15 August every year. This is the occasion जिसमें हम अपने freedom fighter जो थे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ा, ब्रिटिश से लड़ा, हमें freedom दिलवाया, उनको हम उनकी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया है, उन्होंने हमें आज़ाद करवाया है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमें उनको याद करना चाहिए और उनको हमेशा याद भी रखना चाहिए। तो तमाम जो भी यहाँ पर हैं वो बड़ी ध्यान से मुबारकबाद पेश करता हूँ जमहूरी मुल्क बना तेजी से गामजन है। बात कर रहा है हमारे आज जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच ये थीम है वो नया भारत को हासिल करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे आज के मेहमान और इस अजीम हमारे अजीम जवानों ने खून का नजराना पेश करके अंग्रेजों की जबरियत से आजाद किया। ये लोग I'm here to talk from a truly developed India, a nation where every citizen lives with dignity. हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता। On this Independence Day, I put freedom of our nation.
I will never public spaces and will keep my living the spirit of Har Ghar Tiranga, Har family, friends and community to adopt sustainable habits. Respect. I will also avoid